धन्यवाद भारत सरकार, बीजेपी, मोदी जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे लोग, यहाँ पे नहीं, बेसिकली आउट देयर इन आवर होम सब लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं और ये ऑपरेशन अजय के थ्रू काफ़ी हेल्प मिल रहा है सब लोगों को। बहुत बढ़िया, मोदी इज द ग्रेट। The Embassy of India in Tel Aviv has been working continuously to ensure the safety and welfare of all our Indian citizens in Israel. We estimate there are about 18,000 Indian citizens. The Embassy of India in Tel Aviv has been working continuously to ensure the safety and welfare of all our Indian citizens in Israel. Yesterday, the External Affairs Minister announced Operation Ajay to help those Indians who wish to return to India. And today, under that Operation Ajay, the first flight is going back to India. It's going to have almost 200 Indian citizens. These are students, caregivers, business professionals. And we are trying to ensure that we have similar flights in the coming days. We will have one flight tomorrow. And again, through you, I would like to reach out to my fellow Indian citizens here and urge them to remain calm, stay safe by following the local safety advisories, and tell them that we are always there with them. We are standing with them. How many Indians are here residing in Israel, sir? We estimate there are about 18,000 Indian citizens. फ़िलहाल तो हमारे रीजन में उतना ज़्यादा ये नहीं था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ऐसा ये कर रहा है तो मुझे लगा ऐसा कि हमारे रीजन में भी खतरा हो सकता है, तो जस्ट फॉर द प्रिकॉशन आई एम गोइंग देयर। क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ी आपको इस फ्लाइट को लेने के लिए? जस्ट एक रजिस्ट्रेशन करना था एम्बेसी के साइट पे जाके। रजिस्ट्रेशन के बाद वहाँ से एक मेल आया कि अगर आप जाना चाहते हैं तो कंफर्म करें, और कंफर्मेशन के लिए मैंने एक फिर से रजिस्ट्रेशन करना हुआ। फिर फाइनली वो लोग कंफर्मेशन मेल भेजा कि आपका बुक हो गया। जस्ट डरे हुए थे, सहमे हुए थे, कॉल्स आ रहे थे? मेन रीज़न वही है, मैं डरा हुआ नहीं था यहाँ पे, लेकिन घर वालों से एकदम कंटिन्यूस आधे घंटे में कॉल आ रहा है, इसलिए ही बेसिकली जा रहा हूँ। आप क्या कहेंगे भारत सरकार को? उन्होंने ऑपरेशन अजय चला रहे हैं। बहुत धन्यवाद भारत सरकार, बीजेपी, मोदी जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे लोग, यहाँ पे नहीं, बेसिकली आउट देयर इन आवर होम सब लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं और ये ऑपरेशन अजय के थ्रू काफ़ी हेल्प मिल रहा है सब लोगों को। मैं तो इजराइल में घूमने आया था, मेरी बेटी पीएचडी कर रही थी यहाँ पे। मैं 23 तारीख को आया था और मेरी लास्ट फ्लाइट जो 8 तारीख को थी, परंतु बीच में युद्ध का प्रोग्राम हो गया इधर, इसके कारण फिर
फ्लाइट कैंसिल हो गई, एयर इंडिया ने सारी फ़्लाइट कैंसिल कर दी। उसके बाद फिर हमें ऑपरेशन अजय का पता चला, तो हम एम्बेसी से कॉन्टैक्ट किया, तो इन्होंने हमें बोला कि आप इतने बजे आइए और अब आप इंडिया सेफली जा सकते हैं। ये पूरे दिन जब तक आप इजराइल में रहे, एक डर का आपको सामना करना पड़ा? नहीं, हम बहुत सेफ जगह पे थे और बहुत अच्छी जगह पे रह रहे थे हम, उसके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। भारत सरकार को क्या कहेंगे? ऑपरेशन अजय चला रहा है, भारत सरकार चला रही है, भारत सरकार को क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया, मोदी इज़ द ग्रेट। Operation Ajay has been launched to facilitate the return from Israel of our citizens who wish to come back. We expect, I think it can carry about 230 odd passengers. That's what we are hoping can fill it up, but depending, look, this number is broad. Prime Minister Narendra Modi ji has a policy of never leaving any Indian behind. The first charter flight will be reaching Tel Aviv later tonight to pick up Indian citizens and is likely to return to India tomorrow morning. One citizen who was there, I think, injured. Yes, we are aware of that case. Of course, we are in touch with them. We are also, of course, thankfully have not heard of any Indian casualty so far.
congratulate Prime Minister Narendra Modi for launching Operation Ajay. One citizen who was there, I think, injured. Yes, we are aware of that case. Of course, we are in touch with them. I understand the person is in hospital, but I think it's improving or has better situation. We are also, of course, thankfully have not heard of any Indian casualty so far. The ferry flight is expected to reach today later in the evening, and then hopefully they'll pick up passengers and come back tomorrow morning. We expect, I think it can carry about 230 odd passengers. That's what we are hoping can fill it up, but depending, look, this number is broad. How many people can get onto a flight is determined by various factors, including what is the flight parameters. So let's say in that range. We were trying to work that out. I congratulate Prime Minister Narendra Modi for launching Operation Ajay to bring Indian citizens back from Israel. There are around 18,000 Indian citizens in Israel, including 1,000 Indian students whom we love very much. The Indian business community that we love and respect so much contribute to our economy in a big way. Indian nurses and caregivers have become part of our families. The Israeli government is doing the utmost to assist the Indian embassy in Tel Aviv in Operation Ajay. We look forward to welcome all of you back in Israel once we win the war against Hamas, ISIS terrorists. Jai Hind. जब सायरन बजता है तो थोड़ा डर लगता है, बच्ची के साथ फिर शेल्टर में जाना होता है, बजता है वो बजता है जब वो आता है रॉकेट तो बहुत डर लगता है, इस वजह से यहाँ हम लोग सेफ हैं। काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है कि अगर इन केस ऐसा सायरन बजते हैं तो आपको बंकर में जाना है। इजराइल में जारी युद्ध के बीच कई भारतीय सुरक्षित दिल्ली लौट आए हैं। भारत सरकार के ऑपरेशन अजय के तहत सभी नागरिकों की वतन वापसी हुई है। एयर इंडिया के विशेष विमान से कल रात को सभी तेल अवीव से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। स्वदेश लौटे भारतीयों ने भारत सरकार की सराहना करने के साथ इजराइल की स्थिति के बारे में भी बताया है। Initially situation बहुत खराब था. In my area it was fine, but yeah, the situation is still tense. So that's why we are here. आप PhD के लिए गए थे वहाँ? हाँ, मेरा PhD चल रहा है. Critical situation है अभी, क्या
6-7 तारीख से शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक क्या सिचुएशन आप लोगों ने? जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ था वहाँ पे, तो विद इन इसराइल उसको कम किया गया है। बॉर्डर एरियाज पे भी सिचुएशन टेंस है। सबने हेल्प करी है, हमारी गवर्नमेंट ने सबसे एकदम इनिशिएटिव लिया है, तो गवर्नमेंट का तो इसमें बहुत ही बड़ा रोल है। एकदम से एक हफ्ता भी नहीं लगा है, विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर बच्चे वापस आ गए हैं। और मीडिया पर्सन्स को हम वेरी वेरी थैंकफुल, वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर एम्बेसी इन इजराइल। सराहनीय ये स्टेप है और हमें बिलीव नहीं था कि इतना जल्दी जो है ये स्टेप हमारी गवर्नमेंट लेगी, और इतना प्रॉम्प्ट रिस्पांस था एम्बेसी का। मैं कहूँगा कि हैट्स ऑफ उनके लिए, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द एम्बेसी। उन्होंने बहुत बहुत हार्ड वर्क किया। रजिस्टर का जब क्योस बढ़ा तो अब जाहिर है कि वॉर डिक्लेयर हो चुका है, तो जब वॉर डिक्लेयर हो गया, एम्बेसी ने भी जो है अपने वेबसाइट पे जो है वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि आप जो इंडियन नेशनल है अपना इन्फॉर्मेशन डालें, एवरी सारी चीज़, और उस बिहाफ पे फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है सारा जो है प्रोसेस शुरू हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वहाँ जब सायरन बजता है तो थोड़ा डर लगता है। बच्ची के साथ फिर शेल्टर में जाना होता है, बजता है वो बजता है जब वो आता है रॉकेट, तो बहुत डर लगता है। इस वजह से यहाँ हम लोग सेफ हैं। भारत सरकार आपको सेफली यहाँ लेके आए, जी जी जी। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ आके? अच्छा लग रहा है क्योंकि मतलब हम लोग सही टाइम पे आ गए। अभी सदर्न पार्ट में जो है वो समस्याएं ज्यादा है, सेंट्रल के तरफ उतनी नहीं है। नॉर्थ के तरफ पे प्रॉब्लम्स आनी अभी थोड़ी स्टार्ट हुई है, बट सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया जो है वो साउथ ऑफ इजराइल है। मैंने जब फर्स्ट टाइम सायरन बजे उस टाइम क्या माइंड में क्या चल रहा था? मुझे लगा फायर अलार्म है और मुझे लगा कि ओके ठीक है, लाइक आराम से जा सकते हैं करके। मतलब आप वहाँ पे उस टाइम वॉर का सिचुएशन ऐसा हो सकता है? थोड़ी आइडिया तो थी बट फेस नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि आइडिया नहीं होती, क्योंकि इजराइल में हर बिल्डिंग के अंदर पे बंकर्स होते हैं, शेल्टर्स होते हैं, और आपको एक प्री काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है कि अगर इन केस ऐसा सायरन बजते हैं तो आपको बंकर में जाना है। आपके लोकेशन के हिसाब से टाइमिंग का स्लॉट होता है कि जो साउथ में होते हैं उनके लिए कम टाइम होता है, उनको जल्दी जाना पड़ता है। हमारा सेंट्रल था तो हमें 9 मिनट का टाइमिंग मिलता था कि 9 मिनट के अंदर पे आपको बंकर के अंदर पे पहुंचना है सायरन बजने के अंदर पे। आपको बता दें कि हमास और इजराइल के संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अजय शुरू किया ताकि वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित अपने वतन वापस लाया जा सके। इजराइल में तकरीबन 18,000 भारतीय रहते हैं। थैंक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। So we were at the airport and then embassy and government of India people, ambassador of India was there. बहुत ही क्विक प्रोसेस था और बहुत ही स्मूथ और एक्सीलेंट प्रोसेस था। Thanks government of India and like our prime minister and every minister to support us to come back. So we were at the airport and then embassy and government of India people, ambassador of India was there. He received us and we came to the fight. Everything was nice. इंडियन एम्बेसी से आपने कांटेक्ट करा, विदिन कल और आपको हेल्प मिली, तो कैसा ये पूरा बहुत ही क्विक प्रोसेस था और बहुत ही स्मूथ और एक्सीलेंट प्रोसेस था।
It's obviously a difficult time for all those people in Israel who've been dragged into this conflict, innocent people. As you know, today is the first flight of Operation Vijay, and this is completely in keeping with our Prime Minister's vision, Prime Minister's determination that our government, his government, will never leave any Indian behind. Any Indian anywhere in the world that finds himself or herself in harm's way, our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely. And I'm very glad this plane load of students and Indians have managed to fly back safely. And I think in a lot of ways we are deeply grateful to our Prime Minister and of course everybody involved, the Minister Jaishankar, the team at the External Affairs Ministry, the flight crew of this Air India flight, for making this possible, for bringing our children back home safely and soundly and back home to their loved ones. And this is certainly something that is a signature of our government, that we leave no Indian behind in harm's way. So any message for the those who are there and they want to come back? Any message from the Indian? No, stay calm, stay calm, be in touch with the embassy there. Because the government of India will certainly make all the efforts that are necessary to bring you back home safe and to reunite you with your families. This is something that our government has done repeatedly, will always do. Every time that an Indian finds himself in harm's way, our government will step up and do whatever is necessary to bring them back home safely. On first day, actually we were sleeping, and at around 6:30 there was a siren. So because we didn't hear in 2 years, we didn't experience that much of chaos. So we ran to shelter, and with him it's very hard, but we managed. But I guess we live in shelter for 2 hours because another siren. But after that, we were okay there. So how are you feeling now after coming back here? Are you relieved? Yeah, we are so relaxed, and we thanks Government of India and like our Prime Minister and every minister to support us to come back. Thanks to everyone. No, we were not expecting. We were expecting a little bit. I mean, you know, in Israel, there are fights, but we were not expecting something like this big. But this is big. Like, first time in last 3 years, I saw something like, which is going to happen. Like, it looks like it's going to happen big war. Because a lot of military is moving in the north, it's also in the south. We can see it. So can you tell us about your evacuation and how was it? It was very nice. Our university arranged the bus. So we were at the airport, and then embassy and Government of India people, Ambassador of India was there. He received us and we came to the fight. Everything was nice. इंडियन एम्बेसी से आपने कांटेक्ट करा, विदिन कल, और आपको हेल्प मिली, सर कैसा ये पूरा प्रोसेस? बहुत ही क्विक प्रोसेस था और बहुत ही स्मूथ और एक्सीलेंट प्रोसेस था। बिटिया आपके साथ, छोटी बिटिया, बच्चे थे साथ, मुश्किल सिचुएशन काफी क्रिटिकल। हाँ, थोड़ा मुश्किल बच्चे के साथ भागना होता है। जैसे आपको अगर शेल्टर में जाना है तो बच्चे को लेके जाना होता है। बच्चा सो रहा है, खेल रहा है, तो आपको उसको लेके जाना है। आप अकेले भाग के जा सकते हैं, बट बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। अदरवाइज वहाँ का जो प्रोसेस है और जो रहते हैं वहाँ पर, वो सबको पता है कि कैसे आपको टैकल करना है। बहुत खुश है। It all went on good, so there was no problem as such. But it is you have to be careful because something big happening. But it all went very good, no problem. So how was your last 3-4 days? Like, how did you cope up with it? Yeah, it's tense. Situation is very tense. But now it is there. We have to face it. And we are very thankful to the Indian government, especially the Prime Minister Narendra Modi ji, for bringing us back. They started a portal. We registered at night, 12 o'clock in the morning. They confirmed that yes, today you have flight. You can fly to India. We are so relaxed, and we thanks Government of India.
This is the first time that we are facing this much hard situation over there. And we are very thankful to the Indian government, especially the Prime Minister Narendra Modi ji, for bringing us back. And we are hoping for the peace as soon as possible. So yeah, we are thankful to the government, the Indian embassy. They are continuously working 24/7. First of all, I would like to thank Indian embassy over there in Tel Aviv. They support every time for their citizens in Israel. At this situation, they support us very well. And once we got to know that they are going to evacuate us, they started a portal. We registered at night, 12 o'clock in the morning. They confirmed that yes, today you have flight, you can fly to India. And this process was very excellent, and we are here. The government did a tremendous job, especially I am thankful for the Ministry of External Affairs, and I think that I hope that situation will be soon normalized and we will go again for the job. First day, actually we were sleeping, and at around 6:30 there was a siren. So because we didn't hear in 2 years, we didn't experience that much of chaos. So we ran to shelter, and with him it's very hard, but we managed. But I guess we live in shelter for 2 hours. We are so relaxed, and we thanks government of India and like our Prime Minister and every minister to support us to come back. Thanks to everyone.